not flies high because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. A very good morning to one and all present here. I, Anvata Singh from class 10B, feels highly honored to speak about the Armed Forces Flag Day, celebrated every year on 7 December since 1949 in honor of the martyrs and the men in uniform who dedicate their entire life to protect the peace and tranquility of our nation. During this day, the Indian military staff organizes various programs for the general public. These programs are organized with the motive to promote cultural connections amongst the people and the armed forces personnel. The armed forces flag is red, dark blue and light blue in color, where red stands for the army, dark blue stands for the navy and light blue stands for the air force. The main objective for celebrating this day includes providing rehabilitation to the families of war victims and taking actions for the welfare of the serving personnel and the ex-servicemen. In the year 1949, the Armed Forces Flag Day Fund was established by the Committee of the Defence Minister of India, combining all other associated funds such as funds for war victims, Kendriya Sainik Board Fund, Ex-Servicemen Welfare Fund and other units into one in the year 1993. At the time of celebrations, volunteers and general public collect funds by selling Indian flags, badges and stickers and other items. The fund collection is managed by the local arms of the Kendriya Sainik Board of India and the fund collected is used for the welfare of the Indian Army. We children, elders and everyone should feel proud of the Indian Army who gave away their today to protect our tomorrow. We all should honor, salute and acknowledge the Indian Army and their families who sacrificed their lives and happiness to keep us safe and happy. So keep your spirits high, feel proud and celebrate the Armed Forces Flag Day, saluting the undying spirits of our soldiers and acknowledging their undying services to protect the security of our nation. Thank you. Very good morning to one and all present here. Today, I, Yashvin Kidwai of grade 9A, stand before you to present a self-composed poem on Armed Forces Flag Day. The title of my poem is Selfless Soldier's Service. My duty is my pride. My job is to ensure tranquility nationwide. It's my accolade to take up the arms to shelter my home and make sure that everyone freely roams. My felicity is not in the luxuries of any form, but it is in my uniform. I don't aspire to have anything that is grand. My aspiration is to be martyred for my homeland. My earnest wish is to see the national flag unfurl. It looks so sublime when in the air it whirls. Sukhdev, Bhagat Singh, Rajguru are my idols. I worship them because I am their disciple. I feel blissful at the frontiers of my country. Bravely participating in the battles is my gallantry. I feel privileged to be sacrificed and being draped in the tricolor coffins. It's when a soldier finally wins. Thank you. Good morning everyone. My name is Aradhya Tandon. I study in class 1D. Today I am going to say few lines of a soldier. I am a soldier. I love my country. I am a part of army. I protect my country for enemies. Thank you. I am Admiral Karambir Singh. I am the 24th Admiral of India. I protect India from the enemies in water. Indian Navy is at the 7th position in power. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. My name is Sukriti Yadav from class 1C. I am portraying as a pilot. Pilot is a person who flies the aeroplanes and helicopters. I want to become a fighter pilot like Shivangi Singh and served our nation. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम यशी अग्रवाल है। मैं कक्षा 5 की विद्यार्थी आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता झंडा दिवस पर आधारित है। मेरी कविता का शीर्षक है प्यारा तिरंगा।
मेरे देश का झंडा तिरंगा सबसे अनोखा, सबसे निराला। 3 रंग इसमें है समाहित, 3 रंग इसमें है समाहित। बीच में नीला चक्र है डाला, बीच में नीला चक्र है डाला। सबसे प्रथम रंग केसरिया, सबसे प्रथम रंग केसरिया। बलिदानों की कथा सुनाता, शहीदों की याद दिलाता, देश प्रेम का भाव जगाता। मेरे देश का झंडा तिरंगा सबसे अनोखा, सबसे निराला। दूजा रंग है सफेद बच्चा, दूजा रंग है सफेद बच्चा। सबसे सादा, सबसे सच्चा। हमको सिखाता सदाचार, शांति की भावना, निर्मल पावन मनोकामना। मेरे देश का झंडा तिरंगा सबसे अनोखा, सबसे निराला। तीजा रंग है हरा हरियाला, तीजा रंग है हरा हरियाला। प्रगति का रथ इसने संभाला, प्रगति का रथ इसने संभाला। मेहनत कश बन जाएं सारे, मेहनत कश बन जाएं सारे। माटी देश का रूप निखारे। मेरे देश का झंडा तिरंगा सबसे अनोखा, सबसे निराला। सबके बीच में एक चक्र है भैया, सबके बीच में एक चक्र है भैया। 24 काटी समय का पहिया, 24 काटी समय का पहिया। कहता सदा है चलते रहना, कहता सदा है चलते रहना। धर्म और सत्य की राह अपनाना, धर्म और सत्य की राह अपनाना। मेरे देश का झंडा तिरंगा सबसे अनोखा, सबसे निराला। धन्यवाद। Hello everyone, today I am Aman Khan, student of 5th C, is going to recite a poem on Flag Day. When I look upon the flag, I think of liberty, of life laid down in sacrifice to make a nation free. Then I look upon the flag and think, how can it be that I could be so blessed that someone died for me? Again I look upon the flag and tears come to my eyes as I think of all the freedoms lost and hear a soldier's cries. For what, they ask, do we risk it all? So a nation can trample our blood? No, we serve, we die, to stem the tide of oppressions roaring as a flood. Look upon the flag, my people, and see the freedom there. Remember what our nation was, and fall to your knees in prayer. My God Most High restore this land and bring us back to Him, and make our flag humbly wave as a banner of freedom again. Thank you. I am Ujjwal Singh of class 2C. जली चिताओं का हिसाब अभी बाकी है, अमन का नया आफताब अभी बाकी है। सींचा है गुलिस्तां कतरे कतरे लहू से, माटी सा महके वह गुलाब अभी बाकी है। पाल लिए आँखों ने ख्वाब तिरंगे के, पाल लिए आँखों ने ख्वाब तिरंगे के। मुल्क में शहादत अभी बाकी है। भगत सा वीर जिस माटी में, वह दहाड़ने वाला पंजाब अभी बाकी है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में इनकलाब अभी बाकी है। आजाद भारत की हर जरूरत पूरी हो, वीर शहीदों का यह ख्वाब अभी बाकी है, वीर शहीदों का यह ख्वाब अभी बाकी है। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां
अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से। राष्ट्र जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद।